Second is community owned resources. On the basis of ownership, the second criteria is community owned resources. ऐसा रिसोर्स जिस पर कम्युनिटी का अधिकार, ऐसा रिसोर्स जिस पर कम्युनिटी का, समाज का सामूहिक रूप से अधिकार हो, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस. These are resources which are accessible to all the members of the community. Community owned resources means there are resources which are accessible to all the members of the community. Village commons like grazing grounds, जहाँ पर गांव के मवेशी चारा चरते हैं, घास खाने जाते हैं. बरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे डेड बॉडी को या तो जलाया जाता है या दफना दिया जाता है. विलेज पॉन्ड्स, गांव का तालाब, ये सब क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस हैं. पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज are there facto accessible to all the people living there. जो वहां पे रहते हैं उन सभी के लिए वह काम में आता है. So community owned resources means there are resources which are accessible to all the members of the community. Village commons, grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spot, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there. I think you are understanding better and you are feeling you are sitting in front of a teacher in your classroom. Yes. On the basis of ownership, the third criteria of resources is national resources. The third criteria is national resources. राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति. Technically, all the resources belong to the nation. All the resources belong to the nation, like all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries, and oceanic area up to 12 nautical miles, means 22.2 kilometer from the coast, termed as territorial water, and resources there is belong to the nation are called national resources. Technically, all the resources belong to the nation, like all the minerals, water, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, 22.2 kilometer from the coast, termed as territorial water, and resources therein being belong to the nation are called national resources. वे सारे रिसोर्सेस जो किसी राष्ट्र के अंदर, उसकी सीमा के अंदर आते हैं, उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं. जैसे किसी देश में पाए जाने वाले जितने वाटर बॉडीज हैं, नेशनल रिसोर्स है. जितने मिनरल्स हैं, सब नेशनल रिसोर्सेस हैं. जितने वाइल्ड लाइफ है, सारे नेशनल रिसोर्सेस हैं. जितने फॉरेस्ट है, वो सारे नेशनल रिसोर्स हैं. और समुद्र के किनारा जो कोस्टल है, कोस्ट है, उस कोस्ट से 22.2 किलोमीटर हम जब आगे की ओर सी में बढ़ेंगे, मतलब वो 12 नॉटिकल माइल्स है, तो वह भी आपका वहां तक वो नेशनल रिसोर्स आएगा. तो नेशनल रिसोर्स का मतलब कि ऐसा रिसोर्स जो किसी भी राष्ट्र के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आते हैं, उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं. The country has legal power to acquire even private property for public good. The country has legal powers to acquire even private property for public good. गवर्नमेंट को यह पावर है कि वह पब्लिक की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए वह किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ले सकती है अपने अधीन में. You might have seen roads, canals, railway being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire lands. So these are national resources. Now the fourth criteria of resources on the basis of ownership is international resources. The fourth criteria is international resources.
There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open sea, and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions. 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो जोन होता है ओपन ओशियंस में, वह इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। और इंटरनेशनल रिसोर्स को रेगुलेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। जब तक से किसी भी देश को परमिशन नहीं मिलता है, तब तक वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अर्थात 200 नॉटिकल माइल से आगे की जो दूरी है ओपन सी में, वहां पर वो यूटिलाइज नहीं कर सकता।